सो हेलो गाइस, स्वागत है एक और वीडियो पे। और अभी आरबीआई असिस्टेंट आ रहा है तो उसके मेरे को सेक्शनल अभी गाइडली पे आए नहीं हैं। तो बाकी मेरे को लगा कि आईपीएस क्लर्क मीन्स और आरबीआई असिस्टेंट मीन्स को ऑलमोस्ट इंग्लिश सेम ही होगा। तो हम इसके ही सेक्शनल लगा लेते हैं इंग्लिश के। कौन सा लगा? 2 लगा लेते हैं, मॉडरेट दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, ओके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पहले पे ही आरसीएस को स्किप करते हैं। आर्टिकुलेटेड, तो क्या है द फर्स्ट? आर्टिकुलेटेड मतलब इनंसिएटेड, इनकंस सप्रेस्ड तो नहीं होगा, फाल्टर्ड नहीं होगा, स्टटर्ड नहीं होगा। सो देखेंगे बाद में। क्या है अपोजिंग को? इंडोजिनस, द वर्क ट्रांसफर्स कंप्यूटर क्वालिटी इंसाइट इनटू अ रिगरस मैथमेटिकल फ्रेमवर्क्स। तो इंडोजिनस तो इंट्रिंसिक ग्रोथ थ्योरी, इंटरनल, इंट्रिंसिक, इनहेरेंट, एक्सटर्नल, नेटिव। अपोजिट मीनिंग तो एक्सटर्नल ही होगा फिर, ताकि सब सेम ही लग रहा है, ठीक है। ईच ऑफ द वन बियॉन्ड 4 पार्ट, 1 पार्ट एवरी ग्रामेटिकल कंटेक्चुअल एरर। अच्छा, द कमिटी हैज फाइनलाइज द रिपोर्ट एंड विल सबमिट इट टुमारो। तो बी हो जाएगा, वन का बी यहाँ पे, ठीक है। नीदर द मेजर और द एम्प्लॉयज वर्थ, 2 का सी, 1 का बी, 2 का सी यहीं आ गया, 3 का डी। सी केयरफुली रिव्यूड बिफोर टू द क्लाइंट, सेंडिंग, सेंडिंग होगा ना, ठीक है। द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड हिज फाइंडिंग एट द कॉन्फ्रेंस वेरी कन्विंसिंग, वेरी कन्विंसिंग है। एवरी पार्टिसिपेंट, एवरी है तो हैज आएगा, तो 2 का बी, 2 का बी जहाँ भी है तो 3 में है, 2 का बी, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम ही हार्डली, while preparing for the examination he hardly slept and managed to revise all topics। अच्छा, तो 2 का बी जहाँ पे है, 2 का बी है ना, 2 का बी, 2 का बी, 2 का बी, 3 का सी, 3 का है, 3 का बी। तो एबीसी में तो ये तो ठीक है, एंड है ना। while preparing for the while preparing for the exam he hardly slept and managed to revise all the topic। 2 का हमको देखा, हमको सी लग रहा है। क्या है 1 का डी? द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड फाइंडिंग द कॉन्फ्रेंस वेरी कन्विंसिंग। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द बोर्ड reviewing the detailed proposal, the board of directors was reviewing the detailed proposal which was submitted last week। तो हमको डी में एरर लग रहा है, 1 का डी। ईच ऑफ द सीनियर मैनेजर्स, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट हैज आएगा, तो 2 का बी, 2 का बी कहाँ पे है? 2 का बी, एक सेकेंड, ऐसा कुछ इधर भी था क्या? इधर 2 का लाइन में दट गया। 2 का बी, 2 का ए, 2 का सी, 2 का सी, 2 का बी यहीं आ रहा है। द कमिटी रिस्पॉन्सिव for drafting the annual agenda, the committee responsible for the agenda has finalized all the points, ठीक है। The extensive data set collected over the last 5 years, the extensive data set was analyzed। तो 1 का बी में हो जाएगा, 1 का बी 3 जगह है, ठीक है। Neither the director of operation nor the team external consultant agree, neither the director of operation nor the team of external, तो बी आ जाएगा, 1 का बी, 2 का बी। द मल्टीनेशनल कंपनी एम्स, तो 3 का बी, तीनों का बी। हाँ, यहाँ पे क्या है? A surprising event है represented by letter, ऑप्शन चूज द मोस्ट सुटेबल फिल इन दिस ब्लैंक्स, ठीक है। तो सितंबर 2025 रिटेल इन्फ्लेशन डाटा है, एक 99 मंथ लो पे है, 1.5% इज इंपॉर्टेंट पॉलिसी इंप्लीकेशन है आरबीआई के लिए। एक्सेप्ट फॉर अगस्त, अगस्त को छोड़ के इन्फ्लेशन स्लो हुआ है इन एवरी मंथ फिजिकल ईयर।
द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन फर्स्ट हाफ में 2.2% है, जस्ट जो आरबीआई का कंफर्ट बैंड है 2 से 6% में। अर्लियर जो इन्फ्लेशन अप्रोच किया था पर लिमिट द आरबीआई में 4% टारगेट, स्टेटिंग इट वुड नॉट रेस्ट अंटिल, जो वो रेस्ट नहीं करेगा अंटिल इन्फ्लेशन वाज एट दैट लेवल। नाउ दैट इन्फ्लेशन इज currently below this mark, the central bank faces a choice: should it strive to reach the same target or maintain a more dash approach? तो एडजेक्टिव आएगा एक्सपेंसिव, ऑस्टियर, डॉक्टिनियर, कैप्रीसियस अप्रोच। कैप्रीसियस ही लग रहा है क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव, मायोपिक तो नाउन है। एक सेकेंड, कॉल आ रहा है किसी का, छोड़ो। तो क्या है, सेंट्रल बैंक फेसेस चॉइस शुड स्ट्राइव टू रीच, तो इसको भी हम रहने देते हैं, इसको बहुत अलग वर्ड है तो नहीं। कॉन्स्टेंटली, जो कॉन्स्टेंटली लो इन्फ्लेशन इंडिकेट करता है सप्लाई इज एक्सीडिंग डिमांड, सप्लाई एक्सीड कर रहा है डिमांड को। इन सेक्टर सच एज क्लोथिंग एंड फुटवेयर इन्फ्लेशन फॉल कर रहा है स्टेटली, हाईलाइटिंग कर रहा है स्ट्रक्चरल ओवर सप्लाई प्रॉब्लम। अनलाइक चाइना जहाँ पर डिपेंड्स ऑन फॉरेन डिमांड ऑब्जर्व एक्सेस प्रोडक्शन, इंडिया has limited experience in this area and current tariff tension further dash exports. तो ऑगमेंट करना बढ़ाना होता है, एग्जैसरबेट बढ़ाना होता है, इम्पीड रोकना, कैटलाइज बढ़ाना, ऑफस्केट करना, ठीक है। तो इम्पीड करेगा, रोकेगा, टेंशन की बात कर रहा है ना, जो करंट टैरिफ का टेंशन चल रहा है, ठीक है। और सस्टेन इंक्रीज रियल वेजेस में नीडेड है, द प्राइवेट सेक्टर मस्ट टेक दैट लीड, लेना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट हैव रीजन बट दिस नीड टू डैश इनटू एक्चुअल प्रोडक्ट्स, dissipate, coagulate, materialize into, the private investment announce rise, announcement जो है वो राइज हुआ है बट दिस नीड टू स्टैग्नेट फैसिलिटीज, ये भी इसको भी छोड़ते हैं। वन वे द आरबीआई कैन सपोर्ट ग्रोथ इज बाय कटिंग इंटरेस्ट फेवरिंग एकोमोडेशन ओवर, RBI can support growth is by cutting interest rate favoring accommodation over contraction, leniency, perpetuate amplification. Another challenge is accuracy of RBI forecast. In April, 4% inflation, later 2.6 by September, indicates a weakness in the estimation that RBI should that RBI should. This frequent division indicates a weakness in estimation process that RBI should remediate properly. क्या है, after the completion of the last period, what would likely the next step of RBI completely ignore strengthen on forecasting and estimation process to ensure better policy decisions. In the following sentence I mean 4 वाला highlighted है, ठीक है। Out of which one word may or may not be correctly spelled, find out the incorrectly spelled word and mark as your answer. तो शिमरिंग हमको लग रहा है यहाँ पे, रेडोलेंट, मेटिक्यूलसली सही है, डिलीजेंटली सही है। तो शिमर में डबल एम आता है ना, शिमरिंग होता है। तो ये हो गया है। इलेक्टेड ऑफिशियल एक्नॉलेज तो सही लग रहा है। प्रपोजल लिमिटेड, एक्नॉलेज्ड deluges, proposal limited, elected official acknowledge the hardship into the villager particularly during the deluges, said the proposal of, हमको deluges में लग रहा है sovereignty, negotiations, deliberated, commencement, the organization has constantly asserted the Assam sovereignty, negotiation भी सही है लग रहा है। कमेंसमेंट और डेलिबरेटेड में कोई डेलिबरेटेड हमको थोड़ा सा, एक सेकंड, DELI होता है ना डेलिबरेटेड में। कॉम्प्रीहेंड करना, फेसियस
प्रीकॉशन सही है. पेरिल भी सही है. इफेक्सियस, कॉम्परेटिंग द हैजर्ड एंड अपकमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड येट इफ एफिकेसियस. एफिकेसियस गलत लग रहा है यहाँ पे. प्रॉम्प्टली सही है. एवर्ट होगा ना, एवर्ट एवर्ट. कोलेट्रल सही है. ड्वेलिंग सही है. ठीक है. In each of the following sentence highlighted idiom for possible meaning are provided below. Option अच्छा. Despite his confident demeanor, he was clearly in over his head during the technical Despite his confident demeanor, he was clearly in over his head. In over his head. Confident and skilled. हाइड और नॉलेज तो करेगा नहीं. फुल्ली प्रिपेयर होगा नहीं. लेकिन डिस्पाइट हिज कॉन्फिडेंट डिमीन्योर ही वॉज क्लियरली इन ओवर हिज हेड ड्यूरिंग द टेक्निकल डिस्कशन. अच्छा, उसका कॉन्फिडेंट डिमीन्योर मतलब कॉन्फिडेंट है उसके बावजूद तो ये स्ट्रगल कर रहा होगा फिर. द मैनेजर कमेंट्स वेयर डिजाइन टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन द म्यूजियस प्रपोजल. कोल्ड वाटर मतलब आग बुझा रहा है. इनकरेज तो नहीं करेगा. डिस्करेज और डैम्पन करेगा. While negotiating, she preferred to keep her card close to her chest. Share नहीं. Reveal plans cautiously. Reveal her strategy. तो act secretly and strategically. ठीक है. The government announced a new policy to curb inflation, which aims to support. Highlighted the higher. अच्छा. The government announced new policies to curb inflation, which policies है which aim होगा support small businesses. Despite the challenges, the team managed to complete the project within the deadline that was placed by this. Despite the challenges, the team managed to complete the project within the deadline. प्रोजेक्ट है तो वॉज आएगा. She has been working on the initiative tirelessly. She has been working aiming to reduce the gap. The committee recommends several measures. Which measures है तो which include आएगा. In the following sentence, I will need to paper fix already. अच्छा. Amid growing concern over environmental degradation. Amid growing concern, several regulatory bodies initiated stringent monitoring programs. As newly enacted legislation, which had been previously overlooked due to curb the industrial population and restore ecological balance. तो टी लास्ट में आ जाएगा. क्यू है QS. Amid growing concern, several regulatory bodies initiated stricter monitoring projects to ensure newly enacted legislation. QSRT. S to legislation which had been previously overlooked due to bureaucratic emergency aiming to cover which QSTR होगा. The recent policy reform. The recent policy reform है. The recent policy reform has been lauded by economic analysts. R से हो जाएगा तो SQ से. The recent policy reform despite facing vehement criticism from opposition party has been lauded by economic. तो QR economic analysis who emphasizes potential to stimulate sustainable particularly QRST. Several multinational corporations. QR आ जाएगा. QR यही है. Several multinational corporations have finally strengthened their cyber security measures in a decision to protect sensitive client information from the increasingly sophisticated attack perpetrated by sponsored actors. ठीक है. ये बच्चा है तो यही कर लेते हैं अब. What are the following most accurately captures the mechanistic reason for higher microplastic accumulation in the benthic sediment?
So microplastics and aquatic environment can be ingested by small organisms which are consumed by larger species that leads to accumulation of microplastic higher up the food chain, amplifying toxicity in animal and human. Yeah. This process is called bioaccumulation. Studies along Gone Coast scientists from CSI and National Institute of Oceanography, Goa, and the Academy of Scientific and Innovative Research, Ghaziabad, examined those 51 fishes from the 9 species, including mackerel, anchovy, catfish, saturn, oyster, clam, and other commercial varieties collected from various ocean depths. A study published in Environmental Research August found 487 polluting parties in these fish, for which 336 plastic polymers of 19 types. Contamination was higher sediment at the seafloor benthic zone than in open contamination and water plaguing zone. The microplastic problem degraded fishing gear and wastewater is some human scientists of these parties are linked to disrupted gene expression of were linked to disrupted gene expression, oxidative stress, reproductive damage, stunted growth in fish. Human consumption of such fish could result in immune dysfunction and increase cancer risk. ठीक है. Fishes in Korea have a century which is crucial for young fish, act as a feeding ground for older fish. These zones are so important source of affordable protein for local communities. Small pelagic fish such as anchovies, sardines, mackerel are filter feeders that ingest floating particles, making them highly susceptible to microplastic accumulation. Predator fish, including sharks, feed on their smaller fish, transferring microplastic to food chain through process called trophic transfer, ultimately affecting them. They focus on Mandovi, Juari, 90% Goa fish, bamboo sharks, apex predator who examine to access impact of microaccumulation. The researcher addressed 5 critical questions. Quantities of microplastic contamination in commercial fish, factor affecting increasing uptake, primary ingestion of pathways, evidence of ingestion in bamboo sharks. Scientists analyze 30 individual each of mackerel, saturn, and bamboo sharks, whole fish, catfish, conservation, and green mussels. Fish are grouped by feeding type: filter feeder, secondary consumer, carnivorous consumer. The microplastic content measured in soft tissue and highest concentration of species, while catfish has led the benthic in over 10 particle per fish. Bamboo shark has the lowest 3.5 particle per fish. Water was 120 particle per liter. Longer boiled fish accumulated fewer micro, but those feeding closer to contaminated sediment ingested more restrictive tracks, suggesting ingestion through food, water rather than water. These microplastics occur into 4 fiber fragments, forms beads, and 9 colors with blue, black. Moscow sources included fishing gear, a road to electricity, e-waste packaging, and textile. Our study classified the ecosystem as low risk overall. Benthic species are more vulnerable. 11, 19.5 were highly toxic. Expert influence in new urgent executive policy for the environment improve forest management and develop agriculture. Yeah, what was the most accurately capture the mechanistic reason for high magnification the benthic sediment? यहाँ पे है pelagic water acid degraded. कहीं दिया नहीं हुआ है. You consider the author's choice of word for which is the best represent the passage tone, purely descriptive and neutral, alarming, catastrophe, analytical, cautionary, complex. हाँ एनालिटिकल है, कॉशनरी है, ऑप्टिमिस्टिक है, अलार्मिस्ट. What is the following true regarding factor influencing face inverting error? In the passage, small microplastic were often transferred ingested, consumed.
Which intervention will most effectively mitigate microplastic accumulation in marine? Um, okay, what is the best captured dopamine role in reward motivation, addiction, and modern hours? If happiness had a chemical formula, dopamine would be its center, known as feel-good neurotransmitter. Dopamine governs motivation, pleasure, and reward, whether triggered by an achievement or meal or a meaningful relationship. Modern life has made dopamine a double-edged sword. While it traps productivity and satisfaction, overstimulation can lead to addiction. Substances like cocaine, nicotine, alcohol can hijack the brain reward circuit, causing dependency. The brain become more distant because higher level of stimulation to feel normal. Dopamine function through brain reward circuit, especially the mesolimbic pathway connecting the ventral tegmental area to nucleus accumbens. These pathways review behavior, perceived as pleasurable, motivate learning, and predict rewards. Everyday experiences such as eating chocolate and receiving praise trigger dopamine release, encouraging repetition. Addiction occurs when the reward system is overdriven either by drugs or by stimulation activity, which disrupt neurons and prompt the brain to constantly seek higher rewards. ठीक है. Best capture the dopamine role in reward motivation, addiction, and modern. The following best capture dopamine role in reward motivation, addiction, and modern. अच्छा. Technology not have dopamine overload as strongly as drugs once did. Every notification, short video delivered intermittent dopamine suggests mimicking a slot machine reward schedule. Social media reels, streaming service exploit this mechanism, creating impulsive seeking, anxiety, and reduced attention span. Functional MRI studies reveal that digitally stimuli activate the same reward circuit as active substance. The algorithm further intensify this effect by serving content that maximizes user engagement and in gratification, subtly fostering behavioral dependency. Excessive dopamine does not mean greater habit, can fatigue the reward system, dull emotional response, and reduce motivation for ordinary activities. Young adults are particularly vulnerable as their developing brains are highly plastic. Prolonged screen exposure and overstimulation can create hyper short attention span, emotional instability, and decreased sensitivity due to not reward. Over time, this may manifest as anxiety, depression, and poor self-esteem and difficulty finding pleasure in everyday experience. Restoring balance in dopamine fasting, increasing exposure to helps restrain brain to respond slower, more sustainable pleasure. Strategy can include take breaks, mindfulness, physical activity, deep work, learning new skill, engaging in real human connections, proper sleep, nutrition, and emotional awareness stabilize dopamine level. Ultimately, true pleasure is not from chasing constant emotion, but from harnessing dopamine wisely, choosing presence over pain and purpose. तो क्या है? What is the best capture dopamine role in reward motive to the science of addiction, dopamine drugs, digital overload, social media screen time, and the neuroscience of pleasure? The following best capture the dopamine role in reward motivation. The hand dopamine drugs overload, double-edged neurotransmitter in modern life. Consider the author combination scientific and cautionary advice. What the best overall tone? Highlighting subtle and long. Adolescence dopamine receptor syndrome. ये तो है. ये हो गया है. ये बच्चा है और ये बचा है ना. ठीक है. The how the best overall tone. अच्छा ये पढ़ लेते पहले. The 2025 Nobel Prize in Economics has been awarded to Philippe Egoyan, Pierre Howitt, and Joel Mogier for their lifelong effort to explain humanity, remarkable progress over past 2 centuries.
While Mokher has offered a deep historical cultural understanding and economic advancement, Aegean and Howitt have provided its mathematical foundation through the creative destruction model that is first illustrated by Joseph Scumter presents capitalism as an evolving system in which innovation continues to establish and outdated technologies. As its process simultaneously creative and destructive, comfort, however, assumed to be excesses of free markets, open competition, and limited state rule as an enabler of enterprise rather than an active driver of innovation. Yet the historical evidence from Soviet Union development planning and China's state-driven capitalism challenges these views, showing that the state can indeed shape and direct course of transformative way. The Aegean-Howitt model, defined in early 1990 at the end of Cold War, with the dominance of Westinghouse consensus and neoliberal economic policies. Their work transformed computer qualitative insight into a rigorous mathematical framework through endogenous growth theory. The concept of long-term growth originated within economic driven by innovation, education, research, and forces. According to his theory, competition and private incentive act as a primary engines of technological advancement, not centralized state planning. The model assumed world of regular market, global openness, scientific freedom, where innovation flourishes through individual creativity and competitive enterprises. These elegant theoretical structure capture the spirit of post-Cold War capitalism, where deregulation, privatization, and market-driven innovation become hallmarks of global economic policy. However, the novel recognition comes at a moment when very foundation of this model face profound challenges under Donald Trump presidency. The United States witnessed politicization of science, the weaponization of trade, and a sharp turn towards protectionism, undermining the liberal economic order that once sustained global innovation. Meanwhile, the extraordinary technological rise in the state-led economy like China exposes the limits of creativity destruction in endogenous growth model, which fail to fully account the role of state direction, geopolitics, and institutional control in the fostering innovation. These remarks also struggle to explain the implication of widened inequality and fragile global institutions. Thus, the noble community decision appears to both recognition and a warning, a reminder that while liberal democracies owe their progress to openness and social freedom, these very ideals are now under strain. To sustain innovation and equitable growth, the state-enabled capitalist society must protect scientific freedom, uphold competition, and renew their creative intersection possible. Celebrity नहीं है. Optimistic, pervasive about state-led growth model, economic frameworks. Celebratory भी नहीं है, analytical yet cautionary है. And the creative destruction model primarily assumes that state control and government-led mechanism dominate the more care. तो 2 तो हो जाएगा. 2 यहाँ पे है, ठीक है. 2 3 हर जगह है, तो 3 भी सही होगा. यहाँ पे 5 है, तो 5 चेक करते हैं पहले. द पैसेज asserts that free competition. फाइव हो सकता है. 2 3 4 द चाइनीज स्टेट लेट. The creative distinction will only assume that the state control.
द नोबल कमिटी डिसाइड्स बोथ रिकॉग्निशन. ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. नहीं समझ आ रहा है. वो आर्टिकुलेटेड सप्रेस तो नहीं होगा. ये भी नहीं समझ आ रहा है. द ऑथर अंडरलाइंग पर्सूट द नोबल ऑफ. ये वाला थोड़ा टफ था पैसेज. करते हैं अभी, ये समझ आ नहीं रहा हमको. 30 करेक्ट है, 3 गलत है. 29.25 एनालिसिस देखिए, वो वाला पैसेज हमको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था. 80 वाला 94 परसेंटाइल है. ठीक है. 29.25 इतना ही. पैसेज समझ नहीं आ रहा था यार, थोड़ा सा अजीब सा था. इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता. 2345 होता ना यहाँ पे. इनंसिएटेड इसका पता नहीं था. ये एक्सपेंशनरी होता, मार्टर कॉन्ट्रैक्शन होता. ये कौन सा गलत हो गया है. डिलीजियस भी सही था. क्या है. सेडिमेंट्स एक्सेसिंग कर वाटर. अच्छा. डोपामिन डबल इज. अच्छा ये ठीक है. ये अगर समझ आ जाता तो 2 3 1 4 मार्क्स एक्स्ट्रा आ सकते हैं. 33.5. बट ठीक है. 29.25 इज ऑल्सो नॉट बैड. थोड़ी गलती है, मैं इसको देखेंगे. पैसे ज़्यादा थे और इसमें डेली जिसका हमको मतलब नहीं पता था ना. ठीक है. तो यही था गाइज, कैसे अटेम्प्ट करते हैं. बाकी एनालिटिक्स वापस एक बार दिखा देता हूँ. 30 करेक्ट है, 3 रॉन्ग है. वेस्टेड टाइम काफ़ी ज़्यादा, यूटिलाइज टाइम कम है, पर इंग्लिश है तो चलता है. तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.